Hey guys, what's up? It's me Aarti. Welcome to another video on this channel. और आज के वीडियो में I am addressing this phenomenon called toxic positivity and why is it very important for you to stay away from it. So if this interests you, please stick around. और इस चैनल पे जो देखते हो तुम्हें पसंद आता है, hit the like button, subscribe to my channel and hit the bell icon next to it. Now the reason I decided to make a video about this is because जब भी मेरे DMs में मैं questions invite करती हूँ Instagram पे या YouTube पर भी जब मैं Q&A रखती हूँ, the most asked question to me is always how are you so happy and positive all the time, and I always get a little like whenever I read that, because I am not. It is impossible for any normal human being to be happy, chirpy, positive 24/7. मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ, and I consistently make an effort to even show, express it on my social media or on my Instagram stories whenever I'm going through like a low mood, whenever I've had an anxiety attack, whatever, whenever I'm going through the not so positive emotions, I try and vocalize them so people know that I'm a normal human being. So this is actually what toxic positivity is in a nutshell. ये वो phenomenon है जो actually social media की वजह से बहुत ज़्यादा what do you say boom हुआ है in the past couple of years, where you are under this constant pressure of portraying that you're doing your best, you're living your best life, you're always in a great mood, which is not good for anybody, and it is actually quite toxic. And here are the reasons, I'll tell you why. नंबर वन तो क्या होता है ना, इस चक्कर में टू पोर्ट्रे दैट यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ एंड एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग राइट फॉर यू। बहुत बार हम लोग हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको हेल्दी वे में प्रोसेस नहीं करते हैं, उनको डिनाई करते हैं एंड इन द बार्गेन उनको सप्रेस करते हैं, विच इज़ so not good for just anybody. And this is not just me right now. As long as I can remember, I have been this person जिसने हमेशा encourage किया मेरे आजू बाजू के सब लोगों को, मेरे friends को, to always vocalize what they feel. I've always said जो भी लग रहा है बोल के ख़त्म करो, don't keep it inside, don't let it bottle up, because when you bottle things up and when they come out later, they come out in a very unhealthy fashion for both you and for people around you. So I have never been a fan of keeping things inside and masking them with a different emotion and portraying something else when I'm feeling something else. That is something that I just cannot do. कमिंग टू सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, बहुत बार अक्सर ब्रेकअप्स के बाद ऐसा होता है व्हेन पीपल डोंट वांट टू फील दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ हर्ट दैट दे आर फीलिंग टुवर्ड्स समबडी, और दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ एंगर और रिजेंटमेंट और व्हाटएवर दैट दे आर फीलिंग, दे ट्राई टू मूव ऑन वेरी फास्ट एंड देन दे गेट इन्वॉल्व्ड इन अनहेल्दी patterns like hooking up left, right and center, या going on like a drinking marathon with friends, or girls go on shopping sprees and they'll get makeovers done. ये सारी चीज़ें होती है to basically try and run away from what you're actually feeling, because people don't want to sit and process the hurt. They get involved in all these activities to run away from it, which is not great. तो एक चीज़ है यार, जो इमोशन तुम्हें आ रहा है ना अंदर से, उसको फील करना ही पड़ेगा. देयर इज नो वे ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम इट. लाइक यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बट द ओनली हेल्दी वे आउट ऑफ इट इज बाय लेटिंग योर सेल्फ फील इट. तो चाहे वो जो भी इमोशन हो, आई हैव माई डेज व्हेन आई एम काइंड ऑफ फीलिंग लाइक some resentment towards somebody, I have my days of feeling some jealousy, but then I have to sit and let myself feel it. I have my days of feeling low and maybe I want to cry. I sit and let myself cry because that's the only healthy way to do it. एंड वंस तुमने अपने आप को वो इमोशन फील करने दिया, चाहे वो जो भी इमोशन हो, चाहे तुम्हें सडनली किसी के लिए जेलस फील हो रहा है किसी के टुवर्ड्स, देन यू काइंड ऑफ लाइक सिट एंड गेट क्यूरियस अबाउट व्हाई वाज आई फीलिंग दिस. देन यू काइंड ऑफ डू योर ओन बिट्स टू रिजॉल्व इट. जर्नलिंग हेल्प्स अ लॉट. राइटिंग वट एवर यू आर फीलिंग हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज इट काइंड ऑफ गिव्स यू अ सेंस ऑफ क्लैरिटी कि तुम्हें क्या फील हो रहा था, क्यों फील हो रहा था. टॉकिंग टू फ्रेंड्स हेल्प्स सम पीपल, थेरेपी हेल्प्स अदर पीपल. सो यू फिगर आउट कि तुम्हें कौन सा इसमें से सिस्टम इसका वर्क कर रहा है तुम्हारे लिए, and do your bit to kind of resolve that emotion. And once you've gone through this process of sitting and feeling it, resolving it, then you say okay, now I'm out of it. I have kind of figured, मैंने अपना थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कर लिया, मुझे समझ गया कि मुझे ये क्यों फील हो रहा था, किस लिए फील हो रहा था. worked it out. I have taken my lesson from this whole event or whatever this was, and now I'm happy to move on from here and take the good parts of it, be grateful that it happened to me and move on. Then you can feel happy about it. But without sitting and resolving all these in a healthy manner, just going out drinking, posting party pictures and 2-3 मतलब Instagram पे positivity के quotes डाल दिए stories में, does not sort your life out. You have to take all these difficult steps to sort it out.
इन अ नटशेल इफ आई हैव टू से, इट्स अबाउट गेटिंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, क्योंकि दैट्स वॉट पॉजिटिविटी शुड बी अबाउट, राइट? लाइक मतलब तुम्हें दूसरों को दिखा कर क्या करना है कि मैं 24/7 पॉजिटिव रहता हूँ या रहती हूँ। तुम्हें अपने आप में वो फील करना पड़ेगा, एंड ओनली देन इट विल मेक सेंस, एंड यू कैन ओनली ट्रूली फील हैप्पी एंड पॉजिटिव once you've taken care of all your other emotions which are kind of upsetting you, disturbing you. But one thing I'll mention here कि एक तरफ it's okay to let yourself sit and feel whatever you're feeling, जो भी resentment आ रहा है, कुछ jealousy आ रहा है, anger आ रहा है, बट ऑल्सो नोटिस, और ये भी तुम्हें इंट्रोस्पेक्शन से या सेल्फ रिफ्लेक्शन से आएगा, कि ऑल्सो नोटिस दैट somewhere I hope you're not craving for those negative feelings all the time. A lot of us feed off negative emotions because वो भी होता है क्योंकि you know sometimes when you're born a certain way, you're not born a certain way, sometimes when you're raised a certain way, एक तरह की conditioning होती है. Something makes you feel attracted to the negative emotions all the time, to the drama all the time, to the finding problems in every situation all the time. So ensure you're not leaning towards that side. Ensure you're just doing it in a healthy manner, and then you're coming out of it. कभी कभी it can be very addictive to sit in that self-loathing, and you know especially after breakups and everything, and listen to extremely sad songs and all of that, but ensure कि तुम ये सिर्फ healthy manner में कर रहे हो, then you come out of it, and yeah, don't dwell in that place like forever. So summing up the video, positivity तुम्हारे लिए तब ही अच्छी है जब you know you're truly feeling happy and you know optimistic from the inside. It's not at all healthy if you're using it to mask your authentic experiences or your authentic emotions, or even worse, you're like kind of slapping it in somebody else's face who's trying to express themselves. And especially here I'll bring in the mental health aspect, kyunki again I speak about it all the time. When you're going through something like a mental health, you cannot force yourself to be positive, okay? You cannot put that pressure on yourself. चाहे तुम हो या इस वक्त तुम्हारे लाइफ में कोई हो, you cannot put any pressure on them to be positive, because this is not the time. This is their time to feel whatever they're feeling. So again, coming to the whole part of you know letting yourself feel your emotions, so please be extra careful with people battling mental health, and if you're battling it right now, प्लीज मत फील करो प्रेशर अबाउट बीइंग पॉजिटिव. जब मैं डिप्रेशन में थी, आई डिड नॉट गिव माई सेल्फ दैट प्रेशर ऑफ ओ टुडे आई हैव टू वेक अप लाइक यू नो स्प्रिंग आउट ऑफ माई बेड इन विद ऑल माई एनर्जी. होगा ही नहीं. सो पॉजिटिविटी के साथ साथ एक रियलिस्टिक अप्रोच भी होना बहुत ज़रूरी है, और रियलिस्टिक के अलावा मैं कहूँगी एक होलसम अप्रोच बहुत ज़रूरी है. You have to embrace all your emotions in their totality, and like always I'll slip in my favorite Brené Brown. Like she's also mentioned in one of her books that you know you cannot selectively numb emotions. When you try to selectively numb the negative emotions, you're also numbing the positive emotions without even knowing it. And yeah, एक और चीज़ है यार, जब तुम ये चीज़ें मास्किंग के लिए करते हो ना, so that people look at you in a certain way, at some point or the other you're going to get caught, you're going to be busted, because when you put on a show you can't put it on for too long. And जब तुम ये actually अंदर से मतलब तुम्हारे अंदर से ये फीलिंग आती है, तुम फील करते हो, that's when people really connect with that part of you. With that, मेरा आज का प्रवचन खत्म हुआ. Let me know if this video was helpful for you. What are your thoughts on toxic positivity? Have you experienced or gone through this in your life? तुम्हारी कोई फेज रही है? मुझे सब नीचे comments बताओ. I love reading your comments. And अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी भी friend को इस वीडियो से help होगा, तुरंत उनके साथ share कर दो. And hit the like button, subscribe to my channel, hit the bell icon, and on that note, I'll see you guys real soon. You do not forget to keep it spunky, keep it real. Bye bye.